संयुक्त टीम थी नगर पालिका की, राजस्व की, तहसीलदार की और आरई व पटवारी की। किस प्रावधान में, कानून के किस प्रावधान में ये टीम गठित की गई थी? सर आर्टिकल 221 में सर जर्जर मकानों के 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन आर्टिकल बता रही है मैडम। सॉरी सर 53 मकानों की लिस्ट लगी हुई है सर, जिनको जीर्णशीर्ण माना गया है। हाँ, किस आधार पे माना गया वही तो पूछना है आपसे। सर ज्वाइंट सर्वे आंखों से देख के आपको मालूम पड़ जाता है कौन सा जीर्ण है। पीछे सर 53 मकानों की लिस्ट लगी हुई है। अरे वो लिस्ट तो लग गई मैडम, ठीक है। लिस्ट तो जिसको आपने चाहा उसको लगा दिया। जांच करने के क्या पैरामीटर्स हैं पढ़ा है ना आपने? 221 की नहीं पढ़ा? हाँ, 221 में नोटिस कब दिया आपने? एसडीओ पे कॉस्ट लगा दें आपके फॉर एक्टिंग एज ए मिडिल मैन, कॉस्ट लगा देना एसडीओ पे 10,000 रुपए की। बताइए क्या जांच की गई, कहाँ से हैं आप? सीएमओ गोटेगांव निवेदन करी सर, एडिशनल चार्ज। सीएमओ गोटेगांव, हाँ बताइएगा क्या जांच है? नरसिंहपुर है एडिशनल चार्ज इन द, तो उससे हमें मतलब नहीं हो, तो सरकार ने बनाया ना एडिशनल चार्ज जी। अभी बताइएगा, नरसिंहपुर का मैटर है ना ये क्या जांच हुई थी आपकी इस बिल्डिंग के बारे में? सर इसमें सर नस्ती का सर हम लोगों ने देखा। क्या देखा था सर? नोटशीट सर हम लोगों ने। माइक का इस्तेमाल करिए, आगे आ जाइए। सर नस्ती सर कल आई सर देखी थी सर, इसमें सर नस्ती में लिखा हुआ है जी सर। नगर पालिका परिषद के क्षेत्रांतर्गत सर जर्जर मकानों का सर्वे सर स्थल निरीक्षण किया गया था, जिसमें सर संयुक्त टीम थी नगर पालिका की, राजस्व की, तहसीलदार की और आरई व पटवारी की। किस प्रावधान में, कानून के किस प्रावधान में ये टीम गठित की गई थी? सर आर्टिकल 221 में सर जर्जर मकानों के 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन आर्टिकल बता रही है मैडम। म्युनिसिपैलिटीज एक्ट। हाँ दीजिएगा, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट दीजिएगा जी जी। 2 and 3 लाख हैं 221 लाख 2 and 3। हाँ पढ़िएगा ना तो एक से बताते जाइएगा। तो टीम कहाँ लिखा है इसमें कि राजस्व अधिकारी की टीम रहेगी? सर ज्वाइंट सर्वे सर एक साथ हो गया था जी। फिर क्या हुआ ज्वाइंट सर्वे में? फिर उसके बाद सर पीछे सर इसमें 53 मकानों की लिस्ट लगी हुई है सर, जिनको जीर्णशीर्ण माना गया है। हाँ, किस आधार पे माना गया वही तो पूछना है आपसे। सर ज्वाइंट सर्वे आंखों से देख के आपको मालूम पड़ जाता है कौन सा जीर्ण है। कुछ तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट होगी ना इसमें। इस टीम में थे आपके सिटी प्लानर थे, आर्किटेक्ट थे, सिविल सिटी इंजीनियर थे, बताइए ना इस टीम में कौन कौन था? सर तत्कालीन एई के सर इसमें हस्ताक्षर। एई क्या होता है? असिस्टेंट इंजीनियर फॉर द म्युनिसिपैलिटीज। अच्छा, क्या कहा उन्होंने, क्या क्या जांच की? सर पीछे सर 53 मकानों की लिस्ट लगी हुई है। अरे वो लिस्ट तो लग गई मैडम, ठीक है। लिस्ट तो जिसको आपने चाहा उसको लगा दिया। जांच करने के क्या पैरामीटर्स हैं? और फिर 221 में आपने नोटिस कब दिया? 221 में यू आर रिक्वायर्ड टू इशू नोटिस टू द ऑक्यूपायर। पढ़ा है ना आपने? 221 की नहीं पढ़ा? हाँ, 221 में नोटिस कब दिया आपने? नोटिस वाज सेंट लक्षिप इन 27/5/2017 किसको? टू द नेमली कामता पांडे। कामता पांडे कौन है ये? सर मैं उनके लिए हैं? लैंडलॉर्ड है, लॉर्डशिप लैंडलॉर्ड है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसको नोटिस दिया आपने, ठीक है। इसमें नोटिस किसको दिया वो बताया है? किस प्रोविजन में नोटिस दिया आपने? अंडर द म्युनिसिपैलिटीज एक्ट। किस प्रोविजन में? म्युनिसिपैलिटीज एक्ट समझ गए। 221 एक में दिया, 2 में दिया, 3 लाख हैं? 3 में नोटिस था ये आपका अंडर सेक्शन 221 ब्रैकेट में 3 ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज एक्ट। फिर आपने कब इसको गिराया बिल्डिंग को? 2017 के बाद। फॉर योर फेलियर टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द हाउ कैन सब रेवेन्यू ऑफिसर पास एन ऑर्डर अंडर द गार्ब ऑफ सेक्शन 133 CRPC? और बताइएगा ना आपके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाए इसमें कि यू हैव नॉट in case of imminent danger the council shall have power without giving notice to demolish such portion of the building. When did you demolish it? From 2017. And why you were hand in glove with the owner and the occupier? 2013 में पहला नोटिस है। चलिए होगा 2013 में होगा नोटिस, चलिए आपकी बात लिख लेते हैं 2013 में। फिर आपने क्या नोटिस दिया इन लोगों को, टेनेंट्स को? हमें तो 2017 में जब पहला नोटिस है ना आपको, तो आप ही ने तो बताया बीच में कि एफिडेविट फ्रॉम द एफिडेविट फाइल्ड बाय टेनेंट्स हु आर petitioner here, they have admitted that the property in dispute is in a dilapidated condition. कहाँ है वो एफिडेविट?
एनेक्शर P 2013 के नोटिस की डेट कहाँ से आई है मुझे ये बताइए। एफिडेविट सर लॉर्डशिप, हाँ, पेज नंबर। ये पेज नंबर 29 लॉर्डशिप, इन्होंने म्युनिसिपलिटी नरसिंहपुर के सीईओ को दिया लॉर्डशिप। अच्छा, देखते हैं, चलिए। समक्ष नोटरी नरसिंहपुर, पेश हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरसिंहपुर सोनाबाई जैन ए स्वयंसो, मैं शपथ पूर्वक सत्य निष्ठा पूर्वक कथन करती हूँ यह कि शपथकर्ता गांधी वार्ड कंदिली तहसील जिला नरसिंहपुर की स्थायी निवासी है। यह कि कामता प्रसाद पांडे आत्मा श्री नवदा प्रसाद पांडे का मकान गांधी वार्ड कंदेली तो आपको नरसिंहपुर में स्थित है, एक माह में जो मकान पुराना खरीदने जर्जर के- है। Let he complete. Madam, we have denied in specific reply. No such affidavit has been given. Nothing has been mentioned by the SDU. This specific reply that no such affidavit has been given. He is relying on that affidavit which we have denied. ये तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिया है आप। हमने डिनाई किया in reply of the SDM that no. आपके रिकॉर्ड में है ये एफिडेविट? 6 एफिडेविट ऐसे हैं लॉर्डशिप, अच्छा, नॉट वन। हाँ हाँ। और इन्होंने इसी बेस पे सीएमओ नरसिंहपुर से लॉर्डशिप तो ये नरसिंहपुर को आपको दिए थे एफिडेविट कि इनको सीएमओ को दिए थे? सीएमओ को दिया था। सीएमओ की फाइल से दिखाए ना, सीएमओ मैडम तो खड़ी है ना सामने, देखिए उस फाइल से दिखा दें ये एफिडेविट कि उन्होंने दिए थे। जब आपके पास कॉपी है तो सीएमओ के पास तो होगी ही, होना चाहिए। अनलेस आपने उसमें से निकाल लिए फाइल में से। कहाँ है वो एफिडेविट? In the my record it is not. तो फिर ये जवाब कैसे आ गया? फर्दर लॉर्डशिप इन्होंने 18/1/13 Yes, yes. को नोटिस एफिडेविट दिया लॉर्डशिप। One affidavit is here. किसका है बताइएगा? Lordship, one affidavit is here, Lordship, दिखाइए। 13/6/2017. 13/6/2017 का एफिडेविट ही तो है ये जो इन्होंने बता रहे। Lordship. हाँ, दिखाइए कहाँ है आपके रिकॉर्ड में? इनकी फोटोकॉपी है वो जो इनने लगाई है केस में। ओरिजिनल होगा ना? नहीं होगा। Original. आपके अंगूठा निशानी की जांच करवा देंगे फिर। तो डेथ हो चुकी है, बहुत पहले हमने रिप्लाई किया है। नहीं, किया हुआ। डेथ my lord can have the powers to do that. Here the case is that my lord under one they have when we were I was arguing on the point that 221 has not been followed. They come with the affidavit and reply that no, this proceeded under 133. हाँ, तो ये जो नोटिस है 2017 का, ये दिस इज एनेक्शर 27/5/17 का नोटिस इज एनेक्शर। पेज 22। सर कलेक्टर और जो डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग भोपाल के उसमें ज्वाइंट उसमें सर्वे हुआ। सर्वे के बाद दे सर्व्ड अस नोटिस कि 3 दिन के अंदर आप मकान डिमोलिश करिए। ये 2017 में। बिफोर दैट आई वाज नॉट इन पिक्चर लॉर्डशिप, लैंडलॉर्ड वाज नॉट एट ऑल पिक्चर फ्रॉम 13 to 17, सो 13 to 19। इन्होंने इसके बदले में सर 2 मकान भी लिए, ये कहते हुए कि मकान जर्जर है और 10 दिन का हमें समय दिया जाए खाली करने के लिए। इट इज नन ऑफ देयर केस दैट हाउस इज नॉट इन डिलैपिडेटेड कंडीशन। पढ़िएगा, अगला पेज पढ़िएगा जरा, पेज 23 पढ़िएगा। अनुभागीय अधिकारी क्या लिख रहे हैं प्रकरण दर्ज करके? आवेदक कामता प्रसाद पांडे सजन सच के द्वारा अनावेदक दीपक ब्रजेश की मां सोनाबाई जैन से अपनी खानदानी पैतृक जर्जर मकान पुराना सजन सच नरसिंहपुर श्याम टाकीज के पास स्थित खपड़ेल वाली ईंट खपड़ा डबल स्टोरी में लगभग 80 वर्ष से अधिक पुराना है। आवेदक कामता प्रसाद पांडे द्वारा बताया गया कि उक्त मकान उनके नाम से दर्ज है, जो कि अनावेदक दीपक ब्रजेश से खाली करवाना चाहते हैं। 17/9/2019 को समक्ष में समझाइश दी गई थी कि आप 1 सप्ताह के भीतर मकान खाली कर इस न्यायालय को सूचित करें, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक मकान खाली नहीं। 133 के अंतर्गत ही एक्सरसाइजिंग पावर। तो ऐसा लग रहा है इसको पढ़ने से कि जो है मकान मालिक ने कहा कि हमारा मकान खाली करा दीजिए, ये खाली नहीं कर रहे हैं। ये आया है ना इसमें, उक्त मकान उनके नाम दर्ज है जो कि अनावेदक खाली करवाना चाहते हैं। सर ये हम तो आई केम इनटू पिक्चर व्हेन नोटिस वाज सर्व्ड ठीक है, फ्रॉम द एसडीओ। हाँ ठीक आई नेवर वेंट टू एसडीओ लॉर्डशिप। हाँ ठीक है। और उसके पहले 2013 में सर इनका एफिडेविट पढ़ लें, उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इसकी कॉपी तो आपको एंडोर्स्ड है कामता प्रसाद को। आप बोल रहे हैं आप यू नेवर केम इन पिक्चर। I came in picture lordship after this notice was served by the CMO Narsinghpur lordship. On- It is wide 25/5/2019। अच्छा, तो इसकी उसके डेट- पहले I was nowhere in picture lordship। अच्छा, 25/9/19 को ये एसडीओ साहब ने पत्र लिखा। जी, हमें कि आप 3 दिन के अंदर ये मकान जो है मैं रीड लॉर्डशिप पेज 22 ऑफ माय रिटर्न लॉर्डशिप। आपकी अंडरटेकिंग फाइल कर दीजिए या रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आप जैसे ही खाली होगा इसको मकान को तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड दे विल हैव एंड इफ यू इंडक्ट एनी टेनेंट दे विल हैव द प्रेफरेंशियल राइट टू बी इंडक्टेड एज अ टेनेंट। लॉर्डशिप ठीक है भाई, इनको लीगल राइट को इशू नहीं है लॉर्डशिप। My lord, may kindly see it was a case which they have filed on 31/8/19. Again, he is saying that after September he has received the notice. He himself has filed a case on 31/8 before the SDM. ठीक है, वो तो ठीक है भाई, But my lord, मुद्दे की बात यह है
कि मकान जर्जर है, इसका नोटिस ऑलरेडी म्युनिसिपैलिटी जारी कर चुकी है 2017 में। And we have filed the photographs that entire repair has been made. We have constructed the entire building properly. Photographs are already on record. We'll not go into My lord, may I verify this? under which authority you can construct it? Where is the building Repair, permission? my lord, we have mentioned that we have repaired the No, wall. you cannot It's a repair it. two-room house, my lord. हाँ ठीक है, तो you vacate it. He will demolish it, reconstruct it. And They have to proceed on the due process of law. If I sued for eviction. नहीं, वो Under सब 133, my lord, they are, our own high court says that they cannot be done. बताइए कौन सा जजमेंट है? Now there are 4 judgments. आपने eviction का दावा कब लगाया है इनके खिलाफ? Sir, we have not filed any eviction case, Lordship. You have taken a short circuit. Not Yes. Lordship. We came after the notice was served by the SDM. कि आप 3 दिन में करें, otherwise आपके खिलाफ कार्रवाई होगी. अच्छा Otherwise we were not there at all. Now, हाँ 121B, it's the case number which has been registered by the revenue authority. 121B, yes. Now, as per the circulars, number 121 is the miscellaneous works of the SDM with the power can be exercised. लैंड रेवेन्यू कोड में पढ़ रहे हैं, नहीं मतलब वो परिपत्र है राजस्व का. I will pass on this. आप परिपत्र. दीजिएगा. तो 121 जो होता है वो इनका मिसलेनियस रेवेन्यू अथॉरिटीज का वर्क होता है. व्हेन वी आर्ग्यू दिस मैटर मालूम सो प्लीज टू डायरेक्ट कि इस प्रोविजन में आपने रेवेन्यू में किस प्रावधान में किया. दे फाइल एन एफिडेविट सेइंग नो वी हैव डन इन 133 ऑफ सीआरपीसी जी टर्निंग मतलब देयर स्टैंड ऑफ 121B के रेवेन्यू का नए स्टैंड लेके आए ऑन एफिडेविट की 133 में किया. So that's why I have supplied all these 4 judgments. One of that, if they are giving an affidavit, ki they have proceeded under 133 of CRPC. जी My lord, first submission is that the same issue was there, my lord. बताइए ना कौन से जजमेंट को रिफर कर रहे हैं, My lord, एक-एक sir, बताइए. first of all, my lord, our own High Court, my lord, हाँ Viren Kumar Maheshwari. Now, my lord, the second judgment, relying on the apex court, the Kerala High Court, it says, जी now imminent danger has also been relied by Kerala High Court, my lord. The third judgment is Balkis versus Revenue Divisional Officer. Now, my lord, in the end, my lord, I only submit that in the reply we have specifically stated the building is not in a deprecated position. We have stated that it's in a complete proper condition. Photographs are already on record, my lord. It's a 2 rooms, completely, my lord, maintained by us, my lord. And last, that the affidavit has been denied, and we have taken a preliminary objection that you have to go before the Rent Control Authority, which has not been considered by the SDM in its order. ठीक. No evidence has taken. यस The position is the building. पोजीशन ऑफ बिल्डिंग आज तो ठीक है. आप ये बताइएगा कि आपकी जो टीम थी ये कब गई थी वहां पर, अंदर कब गई थी मकान के, जब आपने जांच की थी ना, कब गई थी जांच करने के लिए? आपने बताया ना टीम गई थी इतने सारे अधिकारियों की. मकान कब देखा था भीतर से जाकर? Dated Lordship 24/9/2019. अरे नोटिस आपने 17 में दिया और जांच 2019 में कर रहे हैं. नोटिस तो आपने जो है सेक्शन 221(3) का 27/5/17 को दिया था. Lordship. बिगड़ जांच की नोटिस दे दिया था क्या जी? कब जांच टीम कब गई थी, डेट बताइए. Date is the Lordship 24/9/2019. अच्छा, एसडीओ साहब का ऑर्डर कब का है? That is 19/11/19. Lordship. उसके बाद कब नोटिस दिया आपने 22/9/19 के बाद में? The case of petitioner is Lordship that I should move before the RCA for eviction as I am the landlord, Lordship. The reply of the reply annexure R11, Lordship, page 48 में kindly be seen. जी. 5th line, Lordship. जी. इस बाबत विवाद नहीं है कि 1990 के बाद से आवेदक तथा अनावेदक के बीच में किराएदारी के संबंध में किराएदारी के कोई संबंध न होने से आवेदक द्वारा अनावेदक से किराया नहीं लिया गया. इस प्रकार अनावेदक द्वारा लगभग 19-20 वर्षों से यानी 12 वर्ष से अधिक अवधि में मकान में रहने और अनावेदक तथा अनावेदक के बीच में किराएदारी के संबंध स्थापित न होने से अनावेदक का मकान में विरोधी अधिपत्य स्थापित हो जाने से मकान मालिक काबिज हो गए हैं. डिविजनल ऑफिसर डिसाइड करेगा ना, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा. Lordship, what is their affidavit, Lordship? That's what I'm saying. Their conduct was they have taken the U-turn immediately, Lordship. ये annexure R8 देख लें, Lordship. R80 तो दिखा उसमें रहे हैं. ये कह रहे हैं कि मकान डिलेपिटेटेड है और हम किराएदार हैं. और हमें क्या है, वो तो एफिडेविट है ना R8 तो. R8 और R9, Lordship. हाँ, वो तो एफिडेविट से है. और इसके बेस पे लॉर्डशिप इन्होंने नगर पालिका से 2 मकान ले लिए, हाउस नंबर 36-37 which I have annexed, लॉर्डशिप, at page annexure R10 page 41. इन्होंने एक खाली करने की बिना पे 2 मकान ले लिए सर, देखा और वो मकान ये एंजॉय कर रहे हैं. नहीं मिले. अरे रुक जाइए. RHSDP योजना के तहत महारानी इतना 16 में निर्मित आवासों पेज 41, लॉर्डशिप. हाँ, पेज 41 ही पढ़ रहे. लॉर्डशिप, हितग्राहियों की अंतिम सूची अनुसार दीपक जैन पिता इतना
को 8वीं लॉटरी सिस्टम से आवंटित आवास का कब्जा सौंपा गया था। आपके द्वारा एक मुश्त राशि 25,000 रुपए में जमा किया गया है। शेष राशि 95,000 रुपए आप प्रतिमाह 1,000 रुपए के रूप में नगरपालिका में जमा कर रसीद प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार आवेदन का आवंटन निरस्त करते हुए आपको आवास क्रमांक 36 आवंटित किया जाता Change किया लॉर्डशिप। शर्तें यथावत रहेंगी। हाँ, चेंज ऑफ हाउस हुआ लॉर्डशिप, दूसरा अलॉट हो गया था। इसी प्रकार ब्रजेश शुक्ला को लॉर्डशिप दिया इन्होंने, वो 42 तो पे हमारे सामने है ही नहीं ना। नहीं है, इज देयर, पिटीशन नंबर 2 है वो सर, अच्छा, पिटीशन नंबर 2 है। लॉर्डशिप 42 पे है सर लॉर्डशिप वो। एंड लॉर्डशिप द कंडक्ट ऑफ द petitioner lordship, abrogate and reprobate is not applicable in this proceeding lordship. They have enjoyed the fruits saying that give us 10 days time, we will evict it. And the reply they are filing before SDM is that we are not the owner lordship. And in this affidavit they have clearly admitted that we are the owner, we are the landlord. और हम जो है 10 दिन में खाली कर देंगे। इन्होंने उसकी बिना पे 2 मकान ले लिए लॉर्डशिप। There are the 3 judgments of Supreme Court lordship which says there should not be abrogate and reprobate in the same proceeding. Proceeding before the SDM and municipality, they were very humble. We are very poor lordship. We don't evict us. Within 10 days, we will evict it. And now they are saying that I'm not the owner. I'm not the landlord. So abrogate, reprobate, Supreme Court again and again has said should be discarded in the same proceeding. The party submits that petitioners are taking contradictory stands one after another. Full stop. It is submitted that before the sub-divisional officer, the stand of the petitioners was that the present respondent is not a landowner and he is not taking rent for last 19-20 years, and thus by way of adverse possession they have perfected their title as landlord. Full stop. Thus it is submitted that petitioners are involved in the process of appropriate and reappropriate, which is not permissible in terms of the law laid down by Supreme Court in Prahlad Singh versus Colonel Sukhdev Singh, AIR 1987 SC 1145. In case of Jasraj Inder Singh versus Hemraj Multan Chand, AIR 1977 SC 1011 and AIR 1960 SC 941 in Satya Dhyan Ghoshal and others versus Dev Ranjan Devi and another. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, there is no dispute that the act of the sub-divisional officer is to be examined in the light of the judgments of this High Court, Kerala High Court and Bombay High Court. Full stop. In case of Devki Amma, it is held that attempt of the party to evict the tenant from his tenanted premises, the order for which should be obtained under the provisions of the relevant law. For the present case, it will be the Land Accommodation Control Act. Full stop. In para 13, in case of Devki Amma itself, referring to the judgment in case of TKSM Kalyan Sundaram versus Kalyani Ammal 1975 CRLJ 1717, Madras High Court observed that Section 133 is attracted only in cases of emergency. This was approved by the Supreme Court in Vasant Manga Nikumba and others versus Babu Rao Bhikanna Naidu 1995 SUPP within bracket 4 SCC 54, when Supreme Court held that the dangerous condition of building is in present time but not in future, and read full stop. In case of K. Harilal, Kerala High Court observed that the principle that can be culled out from the decision
in case of Jose V. Tharayal versus Revenue Divisional Officer 2010 bracket में 2 bracket close KHC 217 bracket में SN is that the jurisdiction provided under Section 133 CRPC is confined to public right only. It is pertinent to note that the cardinal principle that the first respondent gets power under Section 133 CRPC only if a public right is involved has been totally lost sight of. Full stop. Next para. Bombay High Court in case of Shri Peter Fernandez noted judgment of Supreme Court in Kachrulal Bhagirath Agrawal and others versus State of Maharashtra and others 2005 9 SCC 36 and has held that Section 133 of the Code as noted above appears in Chapter 10 of the Code, which deals with maintenance of public order and tranquility. Full stop. Thereafter, it is held that proceedings under Section 133 of the Code are not meant to settle private disputes between two members of the public or members of two households, and for public authorities to waste their time in trying to settle such disputes. A magistrate under Section 133 of the Code exercises a public duty, and he can exercise it only when jurisdictional facts are present. There were none present in this case. Are taken into consideration, then there is no iota of doubt that subdivisional officer was acting in excess of his jurisdiction. Full stop. He was trying to settle a private dispute and was acting as a middleman between the landlord and the tenant, and was permitting a shortcut to be used by the landlord for seeking eviction of his property tenant. Next paragraph. However, when reply furnished by the petitioners before the subdivisional officer as is contained in Annexure R111 is taken into consideration, which has not been denied by filing any rejoinder, so also the affidavits which are part of the record as Annexure R18/R19, which though orally denied by Shri Ankit Saxena but not denied in writing by filing any rejoinder, are taken into consideration, then it is evident that and when they are read with the allotment letters issued by the municipality of Narsinghpur in favor of the petitioners, which according to Shri Tripathi are the letters of allotment of immovable property on the strength of rented property being in a dilapidated condition, are taken into consideration, then even right of the petitioners to continue in the said building which is admittedly in a dilapidated condition cannot be upheld. Full stop. Petitioners cannot take contrary stands as has been discussed by Supreme Court in Satyadhyan Ghoshal and others supra, wherein it is held that a party is required to take one stand and is not permitted to appropriate and reappropriate as per his convenience. Full stop. In the present case, on the one hand, petitioners claim that they are not the tenants of the private respondent, as is evident from the reply filed by them before the subdivisional officer, and then on the other hand, before the High Court, they take a plea that they, being tenants, can only be asked to vacate the suit premises only by resorting to procedure of eviction as provided under the Accommodation Control Act. Full stop. This stand of the petitioner reflects on their intentions and clearly makes out that they have not approached the court of
equity with clean hands, full stop. Thus, a party who is seeking indulgence of the High Court in its equitable writ jurisdiction fails to approach the High Court with clean hands and approbates and reapprobates about its stand and after having already taken a benefit on the ground of property being in a deliberated condition, and thereafter seeking allotment of houses from the municipality under the IHSDP scheme, then it is not open to them to assail the order on merits, full stop. Next para. Thus, to conclude, this court is of the opinion that subdivisional officer exceeded his jurisdiction. He acted as an agent oblique middleman for the landlord without, and therefore in the light of the judgment of this High Court in Virendra Kumar Maheshwari Supra and that of Bombay and Kerala High Court, वो नाम डाल लीजिएगा, इतना Supra, SDO had no authority to order for eviction. Therefore, that order being not maintainable in the eyes of law is hereby set aside. Next para. However, setting aside of that order will not grant any direct and substantial relief to the petitioners who have already obtained an order of allotment of another house which is available on record on the pretext of the rented accommodation being in a dilapidated condition. Therefore, they are liable to evict the property to be handed over to the landlord for demolition of the said property, full stop. It is made clear that no repairs will be permissible in the suit property and it will be demolished, and further actions will be taken in accordance with law, full stop. A demolition report will be furnished to the CMO within 15 days of receipt of certified copy of the order. After the 15 दिन में दिवाली हो जाएगी ना? अच्छा, 30 दिन कर दीजिए, चलिए 30 डेज कर दीजिए, चलिए, और ये भी 30 डेज में पोजीशन देंगे, ठीक है, चलिए। हाँ तो हो गया आपको, क्या लॉर्डशिप 30 डेज का दिए ऐसा है? क्या हो गया? He's asking 30 days से दिवाली तो कराने नहीं ना, ठीक है, इवन 11 तक कर ले सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 30 दिन हो गया ना, बस ठीक है। I'm obliging. ये मैडम का शुभ नाम बताइए, क्या नाम है मैडम आपका? लिख लिया ना, ठीक है। हाँ, एसडीओ पे कॉस्ट लगा दें आपके, फॉर एक्टिंग एज अ मिडिलमैन कॉस्ट लगा देना एसडीओ पे 10,000 रुपए की, टू बी पेड इन द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर litigant. District Legal Service Authority, Narsingpur. He will furnish a receipt of depositing such cost within 15 days from his own, out of his own pocket before the registry of the High Court, which will place it before this court for perusal. Airing officer. Huh? Airing officer. हाँ, airing only नहीं, SDO will deposit it and will be free to recover it from the airing official who passed the impugned order. चलिए।